मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है हायर वैल्यू एडिशन इन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल स्मार्टफोन जायंट्स जो हैं उन्होंने अपने प्रोडक्शन बेसिस इंडिया में इस्टेब्लिश कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर लार्ज टैलेंट पूल अवेलेबल है, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ हैं और वो डाइवर्सिफाई भी करना चाहते हैं चाइना से। तो इंडिया ने सक्सेसफुली लोकलाइज कर दी है स्मार्टफोन असेंबली, लेकिन गवर्नमेंट अब फोकस करना चाहती है डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन पर। इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने टारगेटेड सब्सिडी स्कीम्स भी लॉन्च की हैं, जैसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन या फिर पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की स्कीम अभी हमने रिसेंटली देखी थी, और अलॉन्ग साइड पीएलआई स्कीम्स भी चल ही रही हैं। तो इंडिया की जो लोकल वैल्यू एडिशन है वो 15 से 20% है, जबकि चाइना की जो है वो 38% है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि इसको हम डबल करें, लगभग 40% के आसपास लेकर जाएँ, ताकि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी चाइना से कम हो जाए। गवर्नमेंट की जो न्यू कंपोनेंट्स पॉलिसी है उसके अंदर ये मिशन है कि हम 15 से 16% जो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स में लोकल वैल्यू एडिशन है उसको 40 से 50% लेकर जाएं। ऑलरेडी हमारे जो मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया से वो 77 टाइम्स बढ़े हैं पिछले एक डेकेड में। इंडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स हैं वो ग्रो हो रहे हैं लगभग 26% CAGR से पिछले कुछ सालों में, पिछले 9 साल के आसपास में। इंडिया ने अपनी रिलायंस जो है मोबाइल PCBs पर भी जो है वो कम कर दी है, और इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूसर बन चुका है। लगभग 99% जो फ़ोन्स इंडिया में बिकते हैं वो डोमेस्टिकली ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। IT मिनिस्ट्री ने 22,900 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम भी निकाला है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर, और ये अर्लियर PLI स्कीम्स थी उसी के ऊपर ही बिल्ड किया गया है। 6 ईयर स्कीम्स जो है वो टारगेट कर रही हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ की कंपोनेंट्स को, जैसे आपके डिस्प्ले मॉड्यूल्स, कैमरा सब असेंबलीज, PCBs, लिथियम सेल इनक्लोजर्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और फेराइट्स। ये जो है इंपॉर्टेंट होते हैं आपके स्मार्टफोन्स के लिए, लैपटॉप्स के लिए या फिर हाउस होल्ड अप्लायंसेस के लिए। तो लोकल असेंबली ऑफ डिवाइसेस जैसे जैसे ग्रो हो रहा है, इंडिया की जो डिपेंडेंस है चाइना पर इंटरनल कंपोनेंट्स के लिए वो भी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो न्यू स्कीम जो है वो इस डिपेंडेंस को कम करना चाहती है डोमेस्टिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाकर। तो अगर ये स्कीम चल जाती है अच्छे, तो हम 91,600 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे, लगभग 4.5 लाख करोड़ की वर्थ ऑफ प्रोडक्शन कर पाएंगे और 59,000 करोड़ की लगभग इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन्वाइट कर पाएंगे। स्मार्टफोन की जो PLI स्कीम है वो भी सक्सेसफुल रही है अमंग ऑल द 14 प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने 2020 में लॉन्च किए। IT हार्डवेयर PLI स्कीम जो इनिशियली स्लो थी वो भी अब 2023 में मोमेंटम गेन कर चुकी है, जिसकी एलोकेशन भी बढ़ाकर अब 17,000 करोड़ कर दी गई है। गवर्नमेंट ने लगभग $1 बिलियन डिसबर्स किए हैं 2022 से 2025 के बीच में स्मार्टफोन PLI स्कीम के लिए, और जिसमें मेजर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर जैसे फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, पेगाट्रॉन, इनको लगभग 75% ऑफ द फंड्स मिले हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ईजिंग फूड इन्फ्लेशन। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एल नीनो इवेंट जो अप्रैल 2023 से मई 2024 तक एग्जिस्ट किया था वो बहुत ही लंबा था और बहुत इंटेंस था, जिसकी वजह से जो हमारे क्रॉप लॉसेस हुए हैं। स्ट्रॉन्ग एल नीनो की वजह से डेफिशिएंट रेनफॉल हुई अक्रॉस मच ऑफ द कंट्री, और उसकी वजह से जो है बिलो एवरेज एग्रीकल्चर ईयर रहा 2023-24 का, जिसमें खरीफ और रबी क्रॉप्स दोनों ने ही परफॉर्म पुअर किया, जिसकी वजह से जो है फूड इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी। तो पुअर क्रॉप यील्ड्स की वजह से शार्प राइज हुआ फूड इन्फ्लेशन में। तो हाई फूड प्राइसेस की वजह से क्या हुआ, हाउस होल्ड्स को अपना लार्जर शेयर जो इनकम का था वो एसेंशियल्स की तरफ डाइवर्ट करना पड़ा, और जो है नॉन फूड आइटम्स की तरफ वो खर्चा ही नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कंज्यूमर डिमांड जो है खासकर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में वो हिट हुई। लेकिन अब रिटेल फूड इन्फ्लेशन जो है वो ईज़ होने लगी है और सबसे लोएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है मार्च 2025 में। अगर हम देखें नवंबर 2021 से लेके अभी तक का सबसे लोएस्ट लेवल है ये। जो ड्रॉप इन इन्फ्लेशन है ये कैसे हो पाई है पॉसिबल, क्योंकि फार्म आउटपुट में रिकवरी हुई है, फेवरेबल मानसून रहा है पिछला, और अब फुल फ्लैज लानीना इवेंट तो नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी जो है कूलिंग इतनी है सी सरफेस टेम्परेचर्स में कि स्टेबलाइज हो चुके हैं वेदर पैटर्न्स, और नॉर्मल विंटर रही है, हेल्दी रबी क्रॉप रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है फूड इन्फ्लेशन सॉफ्ट होने लगी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के वीट स्टॉक्स जो हैं वो पिछले साल अप्रैल में सबसे लोएस्ट लेवल पर पहुँच चुके थे, और वीट क्रॉप जो है वो स्ट्रगल किया था सेंट्रल इंडिया में, बिकॉज पिछले साल की जो विंटर थी वो डिलेड थी, पुअर सनशाइन थी जनवरी में। लेकिन इस साल जो वीट हार्वेस्ट है सेंट्रल इंडिया में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, क्योंकि स्टेबल वेदर था, एब्सेंस ऑफ फॉग और एक्सट्रीम टेम्परेचर स्विंग्स थे। ठीक है, तो जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर स्लाइटली लोअर दैन लास्ट ईयर यील्ड रही है, लेकिन नेशनल आउटपुट अभी जो है वो ज़्यादा रहा है। तो मार्च भी जो है वो ठंडा रहा, उसकी वजह से प्रॉपर ग्रेन फिलिंग हो चुकी है। प्राइस जो है वो फेयर एवरेज क्वालिटी वीट का वो भी ड्रॉप हुआ है, और स्ट्रॉन्ग प्रोक्योरमेंट जो है वो अब एक्सपेक्टेड है।
तो IMD ने कहा है कि जो इस बार का साउथ वेस्ट मानसून है वो भी अबव नॉर्मल रहेगा, लगभग 105% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज रहेगा, और ये एनसो न्यूट्रल कंडीशंस की वजह से पॉसिबल होगा। तो इससे हेल्दी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगी, तो हमारे को ऑफकोर्स जो है फूड इन्फ्लेशन और सॉफ्ट होने लगेगी, तो प्राइस स्टेबिलिटी आएगी एसेंशियल कमोडिटीज़ में। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस भी जो है वो फॉल हो रहे हैं, तो उससे इंपोर्ट कॉस्ट रिड्यूस होना, सब्सिडी बर्डन ईज होना, ये सब भी इंडियन गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर सकती है। तो लोअर फूड प्राइसेस, चीपर ऑयल इंपोर्ट्स, फेवरेबल करेंसी मूवमेंट, इससे जो है पॉजिटिव टर्म्स हैं हमारे, जो है अदरवाइज जो हमारे को ट्रेड शॉक मिला है। तो लोअर इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से और इम्प्रूव डिस्पोजेबल इनकम होने की वजह से हाउस होल्ड कंजम्पशन भी जो है वो बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जल जीवन मिशन। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जल शक्ति मिनिस्ट्री ने 2.79 लाख करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा डिमांड किए हैं ताकि जल जीवन मिशन स्कीम को कंप्लीट किया जा सके। तो इस मिशन को अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था ताकि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस हर रूरल हाउस होल्ड को पहुँचाए जा सकें। अब इसका ऑब्जेक्टिव मिशन का यही था, हर घर जल मतलब वाटर हर हाउस होल्ड को पहुँचाना, 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे वाटर पहुँचाना घर तक, और सस्टेनेबल वाटर सप्लाई सिस्टम्स हों, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, तो लगभग अगर हम देखें मार्च 2025 तक 14.56 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स, लगभग 73% को जो है इंडिया में टैप वाटर कनेक्शंस हम पहुंचाया जा चुका है। 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में तो 100% कवरेज भी हो चुकी है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने और डिमांड किया है 16th फाइनेंस कमीशन से ताकि इस मिशन को कंप्लीट किया जा सके। ओरिजिनल आउटले तो जो इस मिशन का था वो 3.6 लाख करोड़ था, सेंट्रल और स्टेट दोनों का मिलाकर। लेकिन एडिशनल फंड्स इसलिए मांगे जा रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट बढ़ी है, कवरेज की एक्सपेंशन भी कर दी गई है इस मिशन की, और ऑपरेशनल और मेंटेनेंस सिस्टम्स भी जो है उसकी भी कॉस्ट अलग से है। तो अगर अप्रूवल ऑफ फंड्स नहीं मिलता या डिले हो जाता है तो जो उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या राजस्थान जैसी स्टेट्स हैं जहाँ पर अभी भी 60% से कम कवरेज है, वो वहाँ पर जो है ये स्टेट्स पीछे रह जाएंगी। तो एक डिफाइनिंग फीचर जो जल जीवन मिशन का है वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं ऑपरेशन, मेंटेनेंस और रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए। तो कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट जो है उसमें 4 लाख वुमेन को वाटर क्वालिटी टेस्टिंग के लिए ट्रेन किया जा रहा है यूजिंग फील्ड टेस्ट किट्स। लेकिन क्या चैलेंजेस आते हैं लास्ट माइल डिलीवरी में? जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, वाटर सोर्स सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स गैप्स, वाटर क्वालिटी इश्यूज़। तो 2024 चाहे इनिशियल डेडलाइन थी, गवर्नमेंट अब फोकस करना चाहती है लॉन्ग टर्म वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर और एनकरेज कर रही है कन्वर्जेंस, जैसे कि मनरेगा या स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जैसी स्कीम्स के साथ। तो सेंट्रल एलोकेशंस अगर अल्टरनेट राउट से भी जो है इंक्रीज़ की जाएंगी, तो जैसे CSR पार्टनरशिप्स के थ्रू या मल्टीलेटरल एड के थ्रू, तो जो है ये जो लैगिंग स्टेट्स हैं वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं येलो सी। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चाइना जो है वो साउथ चाइना सी के में जो एग्रेसिव पॉस्चरिंग करने के बाद अब येलो सी में भी जो है अपना जो है एक तरह से मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है और एक जाइगेंटिक स्टील रिग बिल्ड कर रहा है। तो येलो सी क्या है? एक मार्जिनल सी है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का, पोजीशन है ये नॉर्थ ऑफ द ईस्ट चाइना सी में, बॉर्डर्ड है बाय मेनलैंड चाइना इन द नॉर्थ एंड वेस्ट एंड बाय नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया इन द ईस्ट। तो इस सी का नाम येलोइश सैंड पार्टिकल जो कि गोबी डेजर्ट से ओरिजिनेट होते हैं और आकर सरफेस ऑफ द सी पर डिसेंड हो जाते हैं, उसकी वजह से इसको गोल्डन येलो कलर मिलता है, तभी इसका नाम येलो सी रखा गया है। लगभग 960 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ये मेजर किया जाता है, लगभग 700 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट में है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोर्शंस ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो यहाँ पर सबमर्ज होती है वाटर में। यहाँ पर जो है वेदर वेरी कोल्ड रहता है और ड्राई विंटर्स होती हैं और वेट और वार्म समर्स होती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन क्रॉप प्रोग्रेस। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसरो ने एस्टिमेट किया है कि इंडिया की जो वीट प्रोडक्शन है फ्रॉम 8 मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ये लगभग 122.724 मिलियन टन्स पहुँच जाएंगी एज ऑफ 31 मार्च 2025। तो ये क्रॉप है क्या? ये एक सेमी ऑटोमेटेड स्केलेबल फ्रेमवर्क है ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का, जो कि इसरो का ही पार्ट है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि नियर रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके क्रॉप सोइंग की, ग्रोथ की और हार्वेस्टिंग की अक्रॉस डिफरेंट सीजन्स, खासकर रबी सीजन के टाइम पर। तो इसमें जो है डेटा मल्टी सोर्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से इंटीग्रेट किया जाता है, चाहे वो EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 हो, 6 हो या रिसोर्स सेट 2A हो। इसमें ऑप्टिकल और SAR दोनों, मतलब सिंथेटिक अपर्चर रडार, दोनों का जो डेटा सेट्स को यूज़ किया जाता है ताकि मॉनिटर किया जा सके क्रॉप प्रोग्रेस को। तो 8 प्राइमरी वीट ग्रोइंग स्टेट्स जो हैं उनके लिए जो है ये स्टडी की जाती है
जो कि हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए क्रूशियल हैं ये स्टेट्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हेपेटाइटिस ए। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिस्पाइट मल्टीपल एफर्ट्स हम जो है केरला अभी भी हेपेटाइटिस ए के केसेस को रिपोर्ट कर रहा है। तो हेपेटाइटिस ए क्या है? एक वेरी कंटेजियस लिवर डिसीज़, एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो हेपेटाइटिस ए वायरस के एक्सपोजर के बाद हो जाता है। इन्फ्लेमेशन होती है इससे लिवर में। तो पर्सन जो है वो हेपेटाइटिस ए से जो है वो इन्फेक्ट हो सकता है अगर उसने अनक्लीन वाटर ड्रिंक किया है, ऐसा फूड खा लिया है जो कि वॉश नहीं है या फिर अनक्लीन वाटर में ग्रो किया गया है, या फिर एक इन्फेक्टेड पर्सन ने उस फूड को हैंडल किया है, या फिर किसी तरह से क्लोज फिजिकल कांटेक्ट हुआ है एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ। इसका कोई ट्रीटमेंट तो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली इस हेपेटाइटिस ए वायरस को निकाल देती है बॉडी से। और मोस्ट केसेस में लिवर जो है वो 6 महीने के अंदर हील हो जाता है, कोई लॉन्ग लास्टिंग डैमेज भी नहीं होता है। एक सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है ताकि इसको हेपेटाइटिस ए को प्रिवेंट भी किया जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अर्थ डे 2025। टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अर्थ डे हर साल 22 अप्रैल को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वायरमेंटल प्रोटेस्ट मूवमेंट है ऑन द प्लानट। तो इस बार का थीम है आर पार आर प्लानट। इस साल का मैसेज जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने के लिए फोकस दे रहा है। तो पहली बार अर्थ डे 1970 में ऑब्जर्व किया गया था। अर्थ डे जो है वो ग्लोबल हो गया 1990 में। और पावरफुल रिमाइंडर है ये अर्थ डे कि हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is higher value addition in smartphone manufacturing. This topic is important for your economy section. So global smartphone giants like Apple and Samsung, they have set up their production bases in India because of a large talent pool available in the country, government subsidies, and the need also to diversify from China. India has successfully localized smartphone assembly, but government is now focusing on increasing domestic value addition. For that, it has launched targeted subsidy schemes like India Semiconductor Mission and a scheme for passive electronic components as well, which we read a few days back. And apart from that, PLI schemes also exist. So India's local value addition is about 15 to 20%, and we have a plan to double it in the coming years because China has about 38% of local value addition. So government's new component policy aims to increase this local value addition. In fact, it wants to double it in electronics. Mobile phone exports from India have surged 77 times over the past decade, and India's electronic exports have also been growing at a robust CAGR of 26% in the last 7 years. 9 years. So India has already reduced its reliance on PCBAs, with imports dropping from 300 billion to near zero now. Okay, in the last 6 years, India is now the world's largest mobile phone producer, with nearly India is now the world's second largest mobile phone producer after China, with nearly 99% of the phones sold domestically being manufactured locally. So recently, IT Ministry has launched the 22,919 crore incentive scheme for electronics components also to deepen India's electronics manufacturing capabilities. This builds on the earlier PLI schemes also. So the 6-year scheme targets the domestic production of key components like display modules, cameras, sub-assemblies, PCBs, lithium cell enclosures, resistors, capacitors, and ferrites, which are important for smartphones, laptops, and household appliances. So as local assembly of devices has grown, India's reliance on China for internal components has also increased. So that's why this new scheme wants to reduce this dependence by fostering domestic component manufacturing. So if this scheme gets successful, then we will be able to create at least 91,600 direct jobs, about 4.56 lakh crore of worth of production would be generated, and about 59,000 crore worth of incremental investment would be attracted. So the smartphone PLI scheme has been highly successful among the 14 programs launched in 2020, and the IT hardware PLI scheme, which was initially slow, gained momentum in 2023 with an increased allocation of 17,000 crores. The government has disbursed nearly $1 billion between 2022 to 2025 under the smartphone PLI scheme, and with current schemes nearing the sunset in 1 to 3 years, the government is considering extending the incentives also. Okay. So the next topic is easing food inflation. This topic is important for our economy section.
So El Nino event from April 2023 to May 2024 was both prolonged and intense, with Pacific Ocean sea surface temperatures rising up to 2 degrees Celsius above the 30-year average. This strong El Nino led to deficient rainfall across much of India. As a result, 2023-24 period was a below average agricultural year. So the poor crop yields triggered a sharp rise in food inflation, and high food prices forced the households to divert a larger share of their income towards essentials. Consumer demand, especially for fast-moving consumer goods, also got hit. So retail food inflation has now eased significantly to 2.7% year on year in March 2025, which is the lowest since 2021 November. So this drop in inflation was driven by a recovery in farm output during 2024-2025 period, supported by a favorable monsoon. And while a full-fledged La Nina will not materialize, but mild cooling of sea surface temperatures in the Pacific has helped stabilize weather patterns, which has contributed to a normal winter and a healthy rabi crop. So this could lead to softening of food inflation also. As of April 2024, basically the last year, government wheat stocks had fallen to 7.5 million tons, which was the lowest since 2008. But 2023-24 wheat crop struggled in central India because of delayed winter and poor sunshine in January. Now, this year's wheat harvest in central India has been very strong, thanks to stable weather and absence of fog or extreme temperature swings. Even though northern states have slightly lower crop yield than last year, still a cool March has allowed proper grain filling also. So the prices of fair average quality wheat has also dropped, and therefore strong procurement is expected. IMD has forecasted above normal southwest monsoon for June to September 2025, with rainfall expected at 105% of the long period average. This is likely under the ENSO neutral conditions. So a good monsoon would support healthy agricultural production, reinforcing the recent softening of food inflation and ensuring price stability in essential commodities. Falling global crude oil prices are also reducing our import costs and easing the subsidy burdens for the Indian government. The combination of lower food prices, cheaper oil imports, and favorable currency movement also persists in positive terms of trade shock, which would benefit the households, businesses, and the government. With lower inflationary pressure and improved disposable income, household consumption could also see a rise. Okay, so the next topic is Jal Jeevan Mission. This topic is important for your governance section. So Jal Shakti Ministry has demanded 2.79 lakh crore rupees or central funds to complete the Jal Jeevan Mission scheme. So this scheme was launched in 2019 to provide functional household tap connections to every rural household. This mission's core objective is to ensure Har Ghar Jal, water to every household, by provisioning safe and adequate drinking water through individual tap connections by 2024. The aim is to provide 55 liters per capita per day of water and promote sustainable water supply systems also. So as of March 2025, 14.56 crore rural households, that is about 73%, have been provided with tap water connections under this scheme. 13 states and union territories have in fact achieved 100% coverage. According to media reports, Ministry of Jal Shakti has sought an additional 2.7 lakh crore from 16th Finance Commission to sustain and complete the mission. The original outlay for the mission was about 3.6 lakh crore, but now demand for additional funds are stemming from the fact that the costs have increased due to inflation. Coverage expansion is also needed, and the need for operational and maintenance systems is also there. So the reduced approvals of funds could delay coverage in lagging states like Uttar Pradesh, West Bengal, and Rajasthan, all of which are still under 60% coverage. Apart from that, a defining feature of the scheme is also emphasis on community participation. So village water and sanitation committees are responsible for operation, maintenance, and regular monitoring. So capacity building efforts, that is about training of 4 lakh women in water quality testing using field key test kits will also be required for would also require funds. But so what are the challenges in last mile delivery? Geographical diversity, basically there are some hilly and tribal regions which pose logistical challenges. Then we have water source sustainability, like in drought prone areas, source depletion remains a critical issue. Human resource gaps are also there because we have shortfall in trained manpower at the village and block levels. Then water quality issues are also there, fluoride, arsenic, and iron contamination.
affects the portability of water in certain states. Even though 2024 was the initial deadline, government now appears focused on strengthening long-term water supply infrastructure, and increase in central allocations through alternate routes is also being envisaged, like through multilateral aid or CSR partnerships. So this would prioritize lagging states with targeted assistance. So the next topic is Yellow Sea. This topic is important for international relations. So after aggressive posturing in the South China Sea, China is now upping the ante in Yellow Sea by building a gigantic steel rig. So Yellow Sea is a marginal sea of the Western Pacific Ocean. It is positioned in the to the north of East China Sea. It is bordered by mainland China and by North Korea and South Korea. This sea was named for the yellowish sand particles which originate from the Gobi Desert and that descend on the surface of the sea, thereby giving it a golden yellow color. So it measures about, say, 960 kilometers from north to south and some 700 kilometers from east to west. This sea is one of the world's largest portions of continental shelf submerged in water. It is characterized by very cold, dry winters and wet, warm summers. Okay. The next topic is comprehensive remote sensing observation on crop progress. This topic is important for your science and tech section. So ISRO has estimated that India's wheat production from 8 major wheat producing states will reach 122.724 million tons as of March 2025. So it has used advanced satellite-based remote sensing technologies to make this prediction. So crop, what is crop? This is basically a semi-automated and scalable framework used by developed by National Remote Sensing Center of the ISRO. The primary objective of crop is to enable real-time monitoring of crop sowing, growth, and harvesting across different seasons. So crop integrates data from multi-source remote sensing satellites, including from Earth Observation Satellite 4, Earth Observation Satellite 6, Resource Sat 2A. It uses both optical and synthetic aperture radar datasets to accurately monitor crop progress under varying weather and light conditions. The 8 primary wheat growing states covered by ISRO study are Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Punjab, Haryana, Bihar, Gujarat, and Maharashtra. And these states are crucial for ensuring national food security as well. Okay. So the next topic is hepatitis A. This topic is important for your social issues. So despite multiple efforts to contain the spread of communicable diseases, Kerala continues to report a surge in hepatitis A cases. So it is a very contagious liver disease. It is a viral infection which happens after the exposure to hepatitis A virus. It causes inflammation in liver. A person gets hepatitis A from drinking unclean water, eating food which has been washed or grown in unclean water, eating food that has been handled by an infected person, or having close physical contact with an infected person. There is no specific treatment that exists for this virus. Your body will clear the virus on its own. The liver will heal within 6 months with no lasting damage, in most of the cases, of course. And a safe and effective vaccine is also available to prevent this virus. The next topic is Earth Day 2025. This topic is important for your environment section. So Earth Day takes place every year on 22nd April, and it is one of the biggest environmental protest movements on the planet. So this year's theme is Our Power and Our Planet. This year's message focuses on the need to shift rapidly to renewable energy. So the first Earth Day was celebrated in April 1970, initiated by a US senator, and this Earth Day went global in 1990. And this Earth Day serves as a powerful reminder of our collective responsibility to protect our environment. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.